Good morning students. Today we will continue our chapter percentage and its application. This is chapter 8 of your class. See, there is one question. Today we will discuss some examples related to this concept. Here there is a question. In a class 80 student passed and rest failed. किसी क्लास में कितने भी number of students हैं उनमें से 80 student passed है and rest of the student failed. If 80% of the student fail, total number of students जितने भी हैं उनका 80% student अगर failed है, find the number of the student in the class. See, किसी भी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वी विल टेक एज अ 100%. 80% ऑफ द स्टूडेंट अगर उसमें फेल्ड है तो हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट पास्ड. ऑब्वियसली 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20% of the student pass. See here, in a class 80 student pass. So we can say let total number of student in class is equal to x. Passed student is equal to 80. 80% of the student failed. Then 80% of the student failed. It means कितने परसेंट 80% स्टूडेंट जो फेल हुए हैं वो कितने परसेंट पास स्टूडेंट के इक्वल होंगे. दैट इज 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20% ऑफ स्टूडेंट पास्ड. इट मीन्स अगर हम 20% निकालें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का दैट इज इक्वल टू, और पास स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं 80. इट मीन्स 20% of total number of student, total number of student का 20% कितना है 80 है. So 20% means 20 divided by x, of means multiply, and total number of student is equal to x. Write down like this 80. Now solve this equation. X is equal to 80 multiplied by 100 divided by 20, 4, that is equal to 400. It means hence we can say hence total number of student in a class is equal to 400. So this type we will solve this type of question. 400. Now you can say total number of student in the class 400, pass student 80. Then how much remaining? That is 320. So 80% of 400 is equal to what? 80 into 80 divided by 100 into 400. You can cross check your answer. That is 320. It means 320 number of student failed and 80 number of student passed. This type we will solve this question. Now see the second question. Second example, two candidates A and B. Two candidates A and B contest an election. Contest an election. A gets 46% of the valid votes. A gets 46% of the valid votes.
and is defeated by 1600 vote and is defeated by 1600 votes. Find the total number of valid vote cast in the election. Find the total number of valid votes cast in the election. We will do this question based on same concept in the previous example we will discuss. Two candidates A and B contest an election. दो candidates खड़े हुए किसी election पे A and B. A get 46% of the valid vote. A को A B 46% मिले हैं वैलिड वोट के, मतलब जितनी वोटिंग हुई है उन वोटिंग में से टोटल 46% अगर A को मिले हैं तो B को इट मीन्स हाउ मेनी परसेंटेज B will get. Total we always in percentage total we will always calculate as a 100%. So this is 46%. It means B get valid votes 10 minus 6 4 9 minus 4. It means B get 54% of valid votes. A ने अगर 46% मिले हैं वैलिड वोट्स के तो B को वैलिड वोट्स के कितने परसेंटेज मिले? 54%. नाउ सी एंड इज डिफीटेड बाय 1600 वोट. इट मीन्स A को जितने वोट मिले हैं, सपोज A को X वोट मिले हैं तो B को कितने वोट मिले हैं? उस X प्लस 1600 कि दोनों के अंदर वोट का डिफरेंस कितने का है? 1600 का. अगर A को X वोट मिले हैं, B 1600 वोट से हारा है, सॉरी A 1600 वोट से डिफीट हुआ है, इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन A एंड B ऑफ वैलिड वोट्स इज इक्वल टू 1600. और ये 1600 किसके इक्वल है? This is percentage 46% and this is 54%. It means firstly we find out the difference of percentage between A and B. That is equal to 1600. वो किसके equal होगा? 1600 के. So how to find out? Write down. A gets, let number of valid votes is equal to X. Your solution. So A gets 46% of valid vote. That is equal to B gets 54% of valid vote. A get 46% of valid vote, then B will get, you can write down like this, B will get 100 minus 46, that is equal to 54% of valid vote. Difference in percentage of valid vote is equal to 54 minus 46 is equal to 8%. It means 8% of valid vote is equal to 1600. Now find out 8%. 8 divided by 100 into X is equal to 1600. Then X is equal to 1600 divided by 8 multiply by 100. 8 to the 16. 20,000 वोट. इट मीन्स टोटल वैलिड वोट कितने हैं? 20,000. उसका 46% मिला है किसको? ए को. 54% मिला है किसको? बी को. सो दिस टाइम वी विल फाइंड आउट आवर आंसर.
Okay, now see next. Gunpowder contains, third example, gunpowder contains 75% nitrogen, 75% nitrate and 10% sulfur. The rest of it is charcoal. The rest of it is charcoal. Find the amount of charcoal. Find the amount of charcoal in 9 kg of gunpowder. Very easy question. Gunpowder contains 75% nitrate and 10% sulfur. See, gunpowder, it has 3 things: nitrate plus sulfur plus charcoal. If we take percentage as a percentage, it means the sum of all these three is equal, should be 100%. Nitrate is given to you 75%, sulfur is given to you this, charcoal we don't know. So we can find out what is the percentage of charcoal in the gunpowder. Charcoal percentage is equal to 100 minus 85%, that is equal to 10 minus 55, 15%. It means in this gunpowder we have 15% charcoal. So find the amount of charcoal in 9 kg of gunpowder. 9 kg gunpowder का total amount क्या है? 9 kg. That gunpowder is equal to 9 kg. It means हमें क्या find out करना है? We want to find out the quantity of charcoal. Amount of charcoal is equal to, in percentage we know that is 15%. कि उस gunpowder में 15% charcoal है. It means amount of charcoal is equal to 15% of 9 kg. .35 kg. This is one method. एक method तो ये है कि पहले उसका percentage calculate करके then after we will find the value. Second method is what? We know that gunpowder 9 kg. We can find out firstly amount of nitrate is equal to 75% of 9 kg. अगर हमसे ये भी पूछा जाए that amount of nitrate is what, then what we will do? We find out 9 5s are 45, 9 7s are 63 or 4 67, that is equal to 6.75 kg. Amount of sulfur is equal to how much percent? 10%. 10% of 9 kg. That is equal to 10 divided by 100 into 9, 0.9 kg.
Then after we can find out amount of charcoal. How? That 9 minus 6.75 plus 0.9. 9 minus 5, 9 or 7, 16. Here 7. Now find out. It means we can write down like this: 10 minus 5, 5, 9 minus 6, 3, 8 minus 7, this. So this is also one of the method you can apply on it. And you can find out firstly amount, and in the last you will subtract from the total amount. Or you can find out firstly percentage, how much charcoal percentage in the total quantity given, then you find out that percentage of total quantity is equal to 1.35 kg. So any one method you can use for solving it. Okay, now see the next example. My income was increased by 10% and later decreased by 10%. What is the total change in percent in my income? Total change in percent my income. See how to do these type of question. Anything that my income was increased by 10%. पहले 10% इंक्रीज हुई है, देन आफ्टर डिक्रीज बाय 10%. तो इट मीन्स कितना टोटल चेंज आया है इन परसेंटेज माय इनकम. सी जब इस तरह के क्वेश्चन हो जिसमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है, सो वी कैन लेट एज 100. वी विल यूज टू मेथड. फर्स्टली फर्स्ट मेथड सी, लेट माय इनकम was, my income is rupees 100. इस तरह के क्वेश्चन जिसमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है, बट वी आर सॉल्विंग विद परसेंटेज एंड वी कैन टेक एज 100 वैल्यू. माई इनकम इज रुपीज 100. माई इनकम वॉज इंक्रीज बाय 10%. पहले इंक्रीज हुई है, सो इंक्रीज बाय 10%. इट मीन्स 10% ऑफ माई इनकम इज इक्वल टू 100. 10 divided by 100 into 100 become rupees 10. It means new income become increased हुई है, तो 100 plus 10 is equal to 110 rupees. Firstly increase, then later decreased by 10%. अब 10% डिक्रीज हो गई, तो अब मेरी इनकम क्या है 110. 110 का 10% डिक्रीज करें, डिक्रीज्ड बाय 10%, देन 10% ऑफ 110 इज इक्वल टू रुपीज 11. इट मीन्स नाउ न्यू इनकम इज कितनी इनकम है अभी 110 minus 11, sorry 10 minus 1 9, 10 minus 1 9, rupees 99. See now question is what is the total change in percent my income. कि पहले इनकम हो गई थी 110 रुपीज़, अब इनकम हो गई रुपीज़ 99. सो इनमें परसेंटेज चेंज कितना आया? सो परसेंटेज चेंज हाउ फाइंड आउट? Percentage change. What is the change in the value? 110 minus 99. Divide by
ओरिजिनल वैल्यू मीन्स पहले इनकम कितनी थी 110, अब 99 हुई है. नाउ सी दिस वन बिकम 11. सॉरी, परसेंटेज चेंज सी, परसेंटेज चेंज इनकम कितनी है टोटल 100 रुपीज. सो 100 माइनस अब कितनी हो गई इनकम 99. वी विल कंपेयर विद द ओरिजिनल इनकम. 100 माइनस 99, एक्चुअल वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाय 100. इट मीन्स जब पहले इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई तो इनकम में कितना परसेंट चेंज आया, ओनली 1% चेंज. कि व्हेन इट विल बी इंक्रीज, जब वो इंक्रीज हुई है देन इनकम विल बिकम 110, और जब वो डिक्रीज हुई है देन इनकम 99. इट मीन्स व्हाट इज द चेंज इन द इनकम. नाउ ओरिजिनल इनकम इज 100 रुपीज, देन 100 माइनस 99 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100. This is the one of the method. Another method you can use as that we let my income was rupees X. पहले X रुपीज थी, increased by 10%. Then 10% of X is equal to 10 divided by 100 into X. So it becomes 0.1 X. Then new income पहले X थी अब इंक्रीज हो गई है 0.1 X से, दिस बिकम 1.1 X. नाउ डिक्रीज्ड बाय 10%. Then again 10% of X is equal to 0.1 X. So new income, sorry, 10% of 1.1 X किसका डिक्रीज हुआ है, न्यू इनकम जो इन दिस केस आफ्टर इंक्रीजिंग जो इनकम आई है उसमें 10% डिक्रीज हुआ है. तो 10% ऑफ 1.1 X दैट बिकम 10 by 100 into 1.1 X 0.11 X 0.11 X. Now see न्यू इनकम 1.1 X में से 0.11 X माइनस हो गया. नाउ डू इट. 10 minus 1 9, 10 minus 1 9, that become 0.99 X, and this one is X. Actual income was X, or now new income finally 0.99 X. Then percentage change, X minus 0.99 X divided by actual income X multiply by 100. This become 1.00. 10 minus 9 1, 10 minus 9 1. Is it possible? This become 0.99 X. Then what is the change in this? X minus 0.99 X. That becomes 0.01 divided by X into 100. X to X cancel, then 0.01 multiply by 100, that become 1%. So this type we will find out this percentage change. You can use any one method whenever we need only the percentage changes. In the percentage changes don't have the actual value, then we can take as a 100. We can work on a 100 and we can find out our answer.
और इफ यू डोंट वांट टू टेक 100 देन यू कैन टेक x. अगेन सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन कि तुम्हारी इनकम जो थी, माई इनकम वॉज इंक्रीज बाय, जो एक्चुअल इनकम थी वो पहले 10% इंक्रीज हो गई, आफ्टर दिस डिक्रीज बाय 10%. तो व्हाट इज द एक्चुअल चेंज इन माई इनकम, मीन्स जो एक्चुअल में इनकम थी उसमें कितना चेंजेस आया. तो एक्चुअल में इनकम थी x, जब वो इंक्रीज हुई इट बिकम्स 1.1x, जब वो डिक्रीज हुई देन आफ्टर वी विल अप्लाई दिस थिंग ऑन दिस increased income, that is 1.1x. but when you take the percentage change हमें किसके साथ लेना है, percentage change to my income. it means जो income थी x और जो final income आई है 0.99x, उन दोनों में कितना डिफरेंस है that is 0.01x. then we calculate and we find out the 1%. it means there is a 1% change in my income. okay, see next example. In an examination, A scores 30% and fails by 40 marks. While another candidate B scores 40% and gets 20 marks, more than the minimum pass marks, more than the minimum pass marks. Find the maximum marks and minimum pass marks. Find the maximum marks and minimum pass marks. See in this question, in an examination A score 30% and fails by 40 marks. It means मिनिमम पासिंग स्कोर्स जो A के होने चाहिए थे, दैट मिनिमम पास मार्क्स फॉर ए के लिए मिनिमम पास मार्क्स कितने थे, हम व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट मैक्सिमम मार्क्स. लेट मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू x, देन मिनिमम पास मार्क्स फॉर A 30%, जितना भी टोटल स्कोर है 30% ऑफ x, वी कैन से 30% ऑफ x का 30% तो उससे मिला है, बट फेल कितना हुआ है 40 मार्क्स से. अगर उसे 40 मार्क्स और मिल जाते तो वो पास हो जाता. तो इट मीन्स A के जो मिनिमम पास मार्क्स थे वो 30% ऑफ x प्लस 40. सिमिलरली मिनिमम पास मार्क्स फॉर B के लिए कितने हैं, B गेट्स स्कोर 40%, देन 40% ऑफ x उसे मिले एंड गेट्स 20 मार्क्स मोर देन मिनिमम पास मार्क्स. इट मीन्स मिनिमम पास मार्क्स के लिए उसने 40% ऑफ x लिया है. अगर उसने 20 मार्क्स मोर मिले थे तो इट मीन्स अगर हम इसमें से 20 माइनस कर दें तो इट बिकम्स द मिनिमम पास मार्क्स फॉर B. और दोनों के लिए मिनिमम पास मार्क्स क्या होंगे
सेम होंगे. इट मीन्स वी कैन मेक आवर इक्वेशन लाइक दिस. 30% ऑफ x प्लस 40 इज इक्वल टू 40% ऑफ x माइनस 20. इट मीन्स अगर b के 20 मार्क्स कम भी आते तो वो पास हो जाता, क्योंकि इसमें लिखा है b गेट्स 40% score and gets 20 marks more than the minimum pass marks. So we can compare it. Now see, 30% of x, that become 30 divided by 100 multiplied by x plus 40 is equal to 40 divided by 100 multiplied by x plus minus 20. Then solve it. This become 3x by 10 plus 40 is equal to 4x by 10 minus 20. You can shift here, transpose, that is 40 plus 20 is equal to 4x by 10 minus 3x by 10. 60 is equal to x by 10, x is equal to 600. It means total marks is equal to 600. Minimum pass marks, you can put the value of x in any one of the equation. किसी भी एक equation में किसी भी एक पार्ट में हम अगर x की वैल्यू रख दें, then we can find out the minimum pass marks. If we want to write down here 30% of x plus 40. It means 220 marks minimum pass marks for this. Find out from this also, then you can find out your answer is right or wrong. Marks minimum pass marks and total marks is equal to 600. So students, you can do your exercise 8B. Some of the question of 8B exercise we will discuss in the next lecture. Thank you.